everything. First of all, you decide which the land, that will be the initial activity. Once you have decided, then you'll have to get all the permission from the municipalities. Once you have got everything, then you have to get hold of a, or you can do it parallelly also, get hold of an architect who will design the building. Then you'll have the architect will bring in all the manpower to make the building. The first thing will be to make the uh, plinth level, up till plinth level. Then you build up the walls. Once the walls are being built, you can either fix the doors and windows at that time, or maybe once you have finished the roofing, you just leave the space for the doors and walls, and they can be fixed later on. Now see, there is every project, it will depend upon who is handling the project. It is not that everyone will be doing in this exactly the same way, but the logic has to be maintained. Like you cannot make the roof before the plinth. The plinth will have has to be the first thing to be made. So that logic has to be, whether you are making for say a plant for any manufacturing unit, there also some logic has to be. You have to follow some logic and get each and every activity. First of all, identify what all you have to do, and then you give each activity some time duration. In Pert, you are actually, Pert was made for launching a polarized missile during Second World War. So it was a research project. So they did not know exactly what time will be required to finish that activity. So each activity was given 3 times. One was your optimistic time, that is the least time which that activity will take. Then there was a most probable time, which is denoted by TM, which says what is an on the average, how much time you will require to finish that activity. And the third was TP, the pessimistic time, the longest duration which you will require to finish that activity, because it was developed for a research work. It was done for the first time. But if you, whereas CPM, which was developed in Europe, and Pert was developed in USA, but they are similar in nature. There also you divide it, but it was done for a construction work where they were sure how much time will be required to finish that activity. So only one time was given to the activity. Once you have decided what all activities you have to do, then you make a sequence of that, schedule that activities. Which one will be done first, which will be done second, which will be done parallelly, and everything. But there is a definite way of drawing that network. One is your activity on arc, where you donate 2 nodes and 1 arrow for one activity. And another is activity on node. That is, 1 node denotes 1 activity. That I had discussed in last class. I'm just repeating it. So over here, you can follow either of them. But in activity and arc, to make the picture clear, you use dummy activities. Suppose 2 parallel lines are going. So over there, what will you do? You donate 1 dummy line so that it becomes clearer how these activities are going. So dummy line means you draw it by a dashed arrow. For example, I am showing you one. Over here. See, activity 3.6. It is actually not happening. It is donated by D dash or D comma apostrophe. Can you say it? Hello? Yes, ma'am. Yes. D. This is also, see, this is the data given to you. Either you can make your own data, or sometimes data is given to you. You have just to draw the network. So these are the activities: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Now, A, from here we can make out A is the first activity.
So A has no predecessor. That is, it is starting from activity A. Then B and C and D, all these have A as the predecessor. So that is why you can see A is the first activity, 1, 2, 2. This is activity on arc. 2 nodes and 1 arrow is showing you the activity. Can you see it? Hello? Yes, ma'am. Okay. And from A, B, D, and C, all these three activities are starting. After you have completed A, maybe you have, suppose you are launching a play. So you have decided that this particular play will be launched on this particular day. Then you decide who will direct the play, who will finance the play, who all will act in the play. So B, D, and C can be these three things. Now it says the predecessor of E is D. The predecessor D was E. E comes, and here predecessor of F is B, C, and E. F is over here, B, C, and E. So B, if it comes like this, direct, then it will not be clear. The picture will not be clear. It either will be a curved line or a parallel line, which will never become a parallel because it will cut this node. So what you do is you draw B and a dummy from 3 to 6, because here from here F is starting. F has the predecessor B, E, and C. So, and similarly for C. So you have these two dummy activities. It is just to make the picture clearer. You'll know exactly how things are moving. And from here, so these three are the immediate predecessor of F. From F, G and H is starting. The immediate predecessor of G is I. But from it, this is stopping over here. But in a things will not finish until all the activities are completed. So what is happening? 10th is the last node. So H is connected with 10th through a dummy activity. And here you have only one time estimate for each activity. Like for A, it takes 3 weeks, B take 3 weeks, and so on. This data is given to you. On these data, this network is drawn. Then once you have drawn the network, then you find out the early start, early finish, late start, late finish, and slack for each activity. Early start means earliest when you can start. For example, A is the first, so it will start on the 0 day, and it takes 3 days, 3 weeks to finish, to add that duration to it. So 0 plus 3 is 3. Once it is finished, then you go to B. B will start only when A is finished. So it will start on the 3rd day. Once the A is finished, B will start. C will also start when uh, A finishes. Uh, B and C and D. All these three will start when A finishes. So early start of all these three are 3. And the duration is added. 3 is added to this. Uh, 7 is added to C. And 9 is added to D. So these are the early finish. By this time, you should finish this activity. Similarly, E will start when these three are finished. E will start when D finishes. This D is not here.
It should be here. When D finishes. You can see from here, E starts when D finishes. Similarly, so you have to keep on watching the network you have drawn, and then you find the early start and early finish of each activity. Similarly, E will start when D finishes. So 12 of finish, and this is for start. And then you add the duration to it. Similarly, F will start when E finishes. So it is 1770. Then you add the duration to it. G will start when F finishes. So it is 23:23. And then you add the duration to it. H will start when F finishes, because both these start when F finishes. So 23:23. I will start when G finishes, so 27. And then you add the duration. So it will take from 0 to 37 weeks to complete the whole project. So that is the early finish of I. So by latest, all the activities should finish by 37. So this is a forward path. From A to I you are going. From left to right. So here you are going from you are going this way. Then this is your forward path. Then you go backward fast when you're finding the latest start and latest finish. You start from finish. Here you started from start. Now you are going from right to left. Okay, so 37. I is the last activity. So you take so over here, then you find the slack. Slack means, is there a chance of any time to just relax? So that is the difference between either both the starts, late start and early start, or late finish and early finish. If your calculation is correct, both should be equal. So we see in activity A, activity D, activity E, activity F, activity G, and activity I, there are no slack. That means that is the critical path. Critical path means there is no slack. You don't have any scope of relaxation. In other activities, like I had told you right in the beginning, that problem, which was a very simple problem, when two friends meet at breakfast and then they meet at dinner, and breakfast is at 8 a.m. and dinner is at 9 p.m. But one finishes all his work by 8 p.m. So he has 1 hour to relax. He can do whatever he feels like during that 1 hour from 8 to 9 p.m. But B finishes all his work by 9 p.m. So he has no relaxation. So he has no slack. That is the difference. So you identify the critical path, the path which has no slack. So I have identified that A, D, E, F, G, and I, because the slack is 0. So from this critical path is where slack is 0.
In the problem, critical path is A, D, E, F, G, I. Now, what is the duration of each? That is given to you. So you just add that up and you see it comes to 37 weeks. So it shows the project will finish in 37 weeks. And this is CPM, critical path method. That means 37 weeks is the time and you are 100% sure of that. It is deterministic in nature. There is no probabilistic. But in Pert, it is probabilistic in nature. This is the problem on Pert. This is the example given to you. You have activities from A to G, immediate predecessor is given, and 3 timings of each activity is also given to you. First is 12, 16. Actually, this will be the lowest and this will be the highest. Then you use this formula. These two formulae are important. Expected time. So you take the arithmetic mean of these. The most probable time is given a weightage of 4, optimistic 1 and pessimistic 1. That everything goes wrong. That is also rare. And everything goes fine. That is also rare. So you take together, it will come 1 plus 4 plus 1, 6. So divided by 6. This you find out the expected time. And variance, because this is something which is not deterministic. It is probabilistic. That means there is some variance. Something can go wrong, something might not go wrong. So the difference between TP and TO divided by 6 to the power square. Variance is what? Standard deviation का square है. So this is the formula we use for expected time. So over here I have calculated the variance and expected time of each activity. ठीक है? Is it clear? Hello? Yes, ma'am. So this is the network. It depends upon this. ये जो डेटा तुम्हें दिया हुआ है. From A it is starting. B और C का A है, D का C है, E का B and D है, F का E है, G का F है. So here it is activity on node. So you are starting. यहाँ project का ये मतलब है. There is a definite start and a definite finish. So you starting from A. ये node में ही A दिया हुआ है. Here you don't use dummy. ये वैसे ही clear हो जाता है. तो A से B and C, B से E, E से F, F से G, and यहाँ जाता C, C से D, and D and B both are predecessor of E. You cannot start E until both B and D finishes. So when you are going forward path, तो इसका early start आपको find out करना है. So you have to take the maximum early finish of B and D. और जब backward pass होता है तो you have to take the minimum. तो यहाँ जैसे D E फिर यहाँ से है तो it will finishes over here. So this either you can draw this line or you need not draw this line. तो ये हो गया. Then there are only 2 paths. तो इतना early start early finish हमने नहीं किया है. हाँ. So result is this. There are only 2 lines. One is A, B, E, F, G. 60 days आ रहा है. A, C, D, E, F, G. That is coming to 64 days. So this is the longest path. So this is the critical path. इसीलिए हमने इसमें स्टार डाल दिया है. A, C, D, E, F, G. This is the critical path. Now you have to find out the variance of the critical path. Here I have found out the variance of all the activities. But I consider only the variance of A, C, D, E, F and G. इसको add up कर लेते हैं. So expected length of the
ये दिख ये दिख रहा है? हेलो, there is no response from your side. Yes, Yes. ma'am. हाँ, you can Yes, see ma'am. it. So you have understood which is the critical path. Yes, ma'am. हाँ, critical path is the longest path. यहाँ बस दो ही path हैं. So 64 days. The probability that will be completed in 64 days only 50%. ये clear है? Yes, ma'am. हाँ. अब यदि Yes, हम ma'am. पूछते हैं कि what is the probability that will be completed in 70 days, तो 50% तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 64 से 70 बड़ा है. 64 डेज में आपका 50% चांसेस है, तो 70 डेज में नेचुरली 50% से तो ज्यादा ही होगा. और 58% 58 डेज है तो 50% से कम होगा. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. तो x की वैल्यू है या तो 70 है या 58 है. म्यू की वैल्यू आपने निकाला ही है 64. अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं? जो वेरिएंस क्रिटिकल पाथ पे है, जो वेरिएंस क्रिटिकल पाथ पे है उसको ऐड कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो ये म्यू की वैल्यू आ गई 3.65. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ से वही वैल्यूज हमने डाला. हमें पहला 70 डेज का दिया, तो ये तो 3.65 हमने कैलकुलेट ही किया था. तो दिस इज कमिंग टू 1.64. तो इसको इस टेबल से देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट. देखिए ये सॉरी, ये जो नहीं, ये जो टेबल है ये नॉर्मल टेबल है. तो जहां मीन है ये 0 है, और ये जो वैल्यूज दिए हैं ये 0 से दिया है. z जब 0 है तो ये भी 0 है, प्रोबेबिलिटी भी 0 है. बट जैसे जैसे z बढ़ता जा रहा है 0 से 1, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है. दिस इज जस्ट कन्वेंशन. ये नहीं है कि वो एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव है. जो उसके राइट में है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, जो लेफ्ट में है नेगेटिव लेते हैं. और 50% जहां चांसेस है तो प्रोबेबिलिटी 0 लेते हैं. तो z की वैल्यू 0 है. हमारा तो z का वैल्यू 0.44 आया है. तो 0.44 का तो 4 है यहाँ 0.4. तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है. यहाँ दो ही डेसिमल प्लेस तक हम लोग निकाल सकते हैं. 4495 है ना, 4495. यहाँ आएगा करीब करीब ये 1.1700. 44 है, या तो 5 ले लीजिए, दोनों को मिला के ले लीजिए, इसका एवरेज ले लीजिए, ताकि 495 है. ये 5 हो गया, ये 4 ही है. तो ये दोनों का हम मिला के भी ले सकते हैं, इसका एवरेज ले सकते हैं 0.700 प्लस 0.17636 का. तो ये निकाल के हमें वैल्यू आया. तो प्रोबेबिलिटी आ गया ये. तो ये तो 0.4495 जो है सो 0 के बाद है. हमारा 0 के पहले 0.5 है ना. यहाँ तक ये एरिया यहाँ तक तो 5 है, 0.5. यहाँ से यहाँ 0.5 है. टोटल एरिया 1 है इसके अंदर.
तो इसीलिए हम 0.5 को इससे ऐड कर देते हैं 0.4495 से। इसीलिए 0.5 प्लस 0.4495, तो इट इज कमिंग टू 94.95। तो 70 डेज में the chances of completing the project is 94.95। that is almost, माने 70 डेज में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर 78 नहीं 72 कर लीजिए, 75 कर लीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। देन ऑल्सो यू कैन से कि you most probably you will be completing the project। यहाँ उसी तरह हमने 58 लिया है, तो नेचुरली ये तुम्हारा इससे कम है, 0, और यहाँ उससे आप ज्यादा लेंगे, कितना ज्यादा लेंगे वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन सी कि व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। naturally you want the probability to be higher, so you will take more than 64 days, but how much। अब एकदम 64 से हम 90 डेज तो नहीं ले लेंगे ना, हमें उसके वेरिएंस से डिपेंड करता है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या वेरिएंस है उस पर डिपेंड करता है, वेरिएबिलिटी क्या है, कितना उसमें फर्क आ सकता है। So these are the two ways, other things तो I have done, मगर this I wanted to show you how the calculation is being done। ठीक Ma'am, है, the slide is not visible, ma'am. slide is not visible। Yeah, only your screen. Actually, we can see only you, ma'am. ओ, पता नहीं यहाँ सम प्रॉब्लम Uh, कह रहा है Due ना to कि some यू network अपग्रेड, issue. नहीं नॉट नेटवर्क, इट इज सेइंग कि अपग्रेडेड, एंड आई कैन नॉट अपग्रेड इट Okay, बिकॉज okay, फॉर दैट इट इज आस्किंग कि आप आईटी एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए। आई हैव टोल्ड मिस्टर श्रीवास्तव, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आई विल अपग्रेड इट, क्योंकि पहले तो बड़े आराम से होता था, अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि इट इज नॉट अपग्रेडिंग। yes, ma'am. एक मिनट फिर से हम शेयर करते हैं। Yes, ma'am. Okay. अब हो गया, नाउ यू कैन Yes, सी ma'am. इट। हाँ, तो Yeah. ये It is कैलकुलेट, loading, ma'am. हाँ ये है ना, दिख रहा है, वो स्लाइड Yes, शो ma'am. नहीं ये हो रहा load है हो रहा ये। है. तो दिख रहा है ये ना, load हो रहा है. अच्छा जी जी लोड हो जी. रहा है। Yes, ma'am. ये एग्जाम्पल दिख रहा है। मैम अभी तक लोड नहीं हुआ, मैम. अच्छा, मैम ये जो थ्योरीज है मैम, सीपीएम एंड पर्ट, तो हम्म मेनली ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैम? आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने घर का ही, एक मान लीजिए आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हाँ तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगा, यस मैम. तो क्या क्या एक्टिविटीज होगा, यस मैम. कितना दिन लगेगा, तो इस तरह से जी. प्लान करके चलिएगा तो वो आपका काम अच्छी तरह हो जाएगा। यू यस कैन मैम. मॉनिटर इट ऑल्सो। मान लीजिए ये एक्टिविटी को आपने 4 दिन में कंप्लीट करने का सोचा था, मगर कुछ कारणवश नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि वो क्रिटिकल एक्टिविटी है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो जाएगा। यस मैम. तो दैट वे यू कैन कंट्रोल योर, माने प्लानिंग भी है, मॉनिटरिंग भी है, कंट्रोल भी है थ्रू दिस। कंट्रोल भी है. तो यस ये मैम. मैनेजिंग द होल प्रोजेक्ट, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है कि अब तो सॉफ्टवेयर आ गया है ना,
You just have to feed in the data, it will make the network for you. But this is the theory behind it. MS वर्ड MS Okay. हाँ उसका भी आ गया है, नेटवर्क का सॉफ्टवेयर अदर्स का भी आ गया है. Yes, ma'am. But you have to understand what is the theory behind it. Yes, ma'am. It is still loading, ma'am. अच्छा. इसको तो आप जैसे एक्सेल में डाल दीजिए, ये जो डेटा है, यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, यू एंड फॉर्मूला डाल दीजिए, इसका दे दीजिए TOTMT, उसको एक दे दीजिए कि जो है, और फॉर्मूला डाल दीजिएगा तो सारा कैलकुलेट कर देगा आपके लिए. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ TE एंड यू कैन आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस. Okay, ma'am. ये नेटवर्क ड्रॉ कर दिया, ये दिख रहा है. नो मैम, अभी भी लोड ही हो रहा है. नेटवर्क दिखा हो गया लोड. नो मैम, अभी भी लोड नहीं हुआ मैम. एक मिनट. हो गया. नो मैम, लोड ही हो रहा है अभी भी. इसके पहले कम से कम लोड तो हो जा रहा था ठीक से. ऐसा करते हैं, आई सेंड द पीपीटी. तुम लोग अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दो व्हाट्सएप पर, तो आई सेंड यस दिस मैम. पीपीटी टू यू. यू गो थ्रू इट, ओके तो मैम. समझ में नहीं आएगा बाद में मुझसे पूछ लेना. ठीक है. यस मैम. यस मैम. ओके मैम. ओके. दूसरा विल बी डूइंग ऑन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक मैम. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक. ये तो लास्ट टाइम का ही एक्सटेंशन है. यस मैम. This is visible statistical quality control.
No. No, ma'am, not yet. अब विजिबल है? नहीं मैम, अभी भी नहीं आया। Ma'am, you can explain it and later you can share the PPT. एक्चुअली ऐसा ना, ये सारे फॉर बिकॉज दिस इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, तो बिना Yeah. फॉर्मूला का तो हम बता ही नहीं सकते हैं। Yes, theory नहीं ma'am. है ना, कैन एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दैट। Okay, 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 ma'am. Yeah. शेयर तो क्या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मैम, ये लोड होने में टाइम और लग रहा है। Actually, statistical quality control is using statistics to have a control over your production. Okay. See, statistics में हमें क्या करना है, हमें एक निकालते हैं मीन और एक निकालते हैं Mean रेंज। median. मीन Okay, ma'am. मीडियन जो भी एक सेंट्रल टेंडेंसी, Yes, मीन ma'am. मीडियन मोड, ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी कि उसका एक एवरेज वैल्यू क्या होगा। एंड अनदर इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, उसमें वेरिएशन क्या होगा, जैसे सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, सबसे कम कितना हो सकता है, तो दैट इज नोन एज रेंज। दैट इज नोन एज रेंज। Lot of people have worked on it, especially in America. There was one Walter A. Schubert way back in 1924, and Simon Okay. and Deming. Deming is very important. He is very Deming quality award भी मिलता है, Deming award. Actually, he did not get much importance in USA, so he went away to Japan, and over there, the Japanese, they improved their quality because of him. Deming, got the help from Deming, and then they improved on it. Can you see his face, Deming? No, ma'am, not yet loaded, ma'am. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पिछली बार तो कम से कम स्क्रीन तो शेयर हो जा रहा था। Can you view the screen? Ma'am, it is not yet loaded, ma'am.
अभी भी नहीं दिखाई दे रहा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? नो मैम. तो क्या करें हम लोग, क्योंकि बिना वी यू कैनॉट सी इट, हम लोग फेस टू फेस नहीं कि हम ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके बता दें. Yes. Actually all these things na, they make use of normal distribution. Normal distribution में it tells you कि it is a symmetric curve. Generally things are distributed normally. जैसे बहुत लंबा आदमी भी बहुत कम होगा, जायंट, और बहुत ड्रॉप भी कम ही होगा, होगा ना. मतलब हाइट का ही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लें तो एक नॉर्मल हाइट है, माने नॉर्मल हाइट इट माइट वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इंडिया में भी वैरी कर सकता है, नॉर्थ इंडिया का नॉर्मल हाइट कुछ होगा, साउथ इंडिया का कुछ होगा, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. तो इफ यू ड्रॉ द कर्व इट विल बी अ सिमेट्रिक कर्व. जो जो मीन होगा, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. और अबाउट 65% of the population lies between plus minus 1 sigma. 1 sigma means 1 standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स आई. आई कैन बी एनीथिंग, एनी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए आपके पास 100 है, 200 है, जो भी है, तो डिफरेंट वैल्यूज इन होल स्क्वायर. क्योंकि फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो होल स्क्वायर लेने से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. यदि नहीं होगा तो क्या होगा कि इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n and this whole square root. So that becomes the standard deviation. So what is the variance? What is the variance in the population? That matters a lot. For example, if you take two class, दोनों का एवरेज मान लीजिए एक है, क्लास ए एंड क्लास बी, एवरेज इज द सेम बट वेरिएंस इज डिफरेंट. तो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों क्लास एक जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. हो सकता है एक क्लास में हाईएस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है और लोएस्ट भी बहुत ज्यादा लो जा रहा है, और एक क्लास में ऑल ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर, ज्यादा उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है. तो दोनों क्लास कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कभी कंपैरिजन केवल एवरेज पर जो कर देते हैं वो गलत है. यू हैव टू टेक बोथ एवरेज एंड वेरिएंस एंड सी, उसका रेशियो निकालिए और तब देखिए कि उनमें कौन ज्यादा है और कौन कम है. तो दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी मींस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लासेस. उनका मीन क्या है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. किसका ज्यादा होगा तो उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, कम होगा. If they are equal, then only you can see कि these two things are similar in nature. एक ये लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन करीब दिस देख ही नहीं सकते तो क्या बताएंगे. ये देख सक रहे हैं? नो मैम. एक्चुअली ऐसा तरह इस तरह का ग्राफ नहीं देख सक रहे हैं, देख नहीं सक रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया. एक्चुअली इट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में टच करती है. दैट मीन्स 97% of the population lies between plus minus 3 sigma. 3 sigma means standard deviation.
तो यदि आपका जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन दोनों के लिमिट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब तो आपका क्वालिटी ठीक है। मगर इसके बियॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यू हैव टू टेक अ सैंपल एंड चेक कि आपका जो वैल्यू ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। If it is within, then you say it is in control, and if it is not, then it is not in control. तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल सब क्वालिटी ऑफ द मटेरियल उसका। मान लीजिए इफ यू आर गोइंग टू बाय अ सीमेंट बैग ऑफ 40 kg, अब हर एक बैग एग्जैक्टली 40 kg नहीं होगा। आप यदि नाप कर देखिएगा तो कोई हो सकता है 40.001 होगा, कोई 39.00.98 होगा। ये थोड़ी है कि हर एक बैग 40 kg ही होगा, बट उसको आप अच्छा कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मैम, यदि उसमें आपका, टॉलरेंस होता होगा मैम। हाँ वही टॉलरेंस लिमिट को देखना पड़ता है। उसका भी क्या टॉलरेंस लिमिट, तो यू इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी व्हिच यू आर यूजिंग। यस मैम। तो क्योंकि 99 अब almost all the things lie between plus minus 3 sigma, तो plus minus 3 sigma के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम ड्रॉ करते हैं, उसका भी प्रोसीजर है, बट आई कैन नॉट शो इट टू यू। लोड ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। उसके भी टेबल्स हैं, यू हैव टू टेक दैट वैल्यू एंड सी कि वेदर इट इज विद इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। ओके मैम। You can't see anything ना? नो मैम। ठीक है, फिर हम क्या करें? आई थिंक I'll send these two PPTs, you go through them। अब जो होगा फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? I'll see to it कि ओके मैम। क्या बात है। हाँ, यस मैम। यस ओके, मैम, इट विल बी बेटर मैम। हाँ बेटर, because you cannot see it, then how can I explain it to you? यस मैम। ओके, देखते हैं अगले क्लास में। I'll talk to मिस्टर श्रीवास्तव कि क्या कर सकते हैं, कि जब आप देख ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा है। यस मैम। श्रेया गुप्ता आई has थिंक joined for the first time। नो श्रेया मैम, या गुप्ता, आई थिंक बाय डिफॉल्ट शी हैड जॉइंड मैम, आई थिंक। या शी अभी लेफ्ट तक तो आल्सो। उसका नाम नहीं था। यस मैम। Okay, but you send me your email addresses so that I'll send all these PPTs to you. ओके मैम। Okay.